एक और तो याद ही नहीं दिलाते तुम लोग. Seepage velocity and discharge velocity. Seepage velocity and discharge velocity. After this, factors affecting permeability. Factors affecting permeability, and then how you are going to determine coefficient of permeability. First in lab, in field, and then by the formula. So in laboratory, you have to do by two methods. One is constant head method, another is falling head permeability method. Constant head method and falling head permeability method. Falling head permeability method. Got it? So apart from this, the only one topic is left, that is stratification, that tomorrow I will take. Today and tomorrow I will take all the numericals on this one, permeability. अगर से आप इतना पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आता है आपको न्यूमेरिकल हर टाइप के. मैं खुद करा रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है नहीं. So each and every type of problems I am solving in the class itself. So please be with calculator, pen and notebook. One problem I will solve, and the rest of the problems you have to solve yourself only. You have to solve yourself only. Keep it. Okay. So before that, I will once again derive the formula for this constant head permeability and falling head permeability. Derivation, kya formula kya hai, what is that I will tell you. So this is the constant head permeability test. So you know that all the arrangements I have shown you. This is the head. So this is the soil specimen. This is a bottom tank. So water is collected here Q at particular time T. So that is whatever the value you have converted, it is capital Q, and time is T. 10 minute में कितना पानी जमा हुआ, like that you have to collect. See, this is the head of water, bottom tank, and this top tank, this overhead tank, and here head is maintained constant here, and this is the soil specimen. This is the soil specimen. This I've shown you already. So now we know that from the Darcy's law, Q is equal to K into I into A. Q is equal to K into I into A. Or you see here, Q means Q by T. See here, in fluid mechanics, what you take? Capital Q is equal to, you take discharge. But here it is volume here, and small q is discharge. And small q can be written as, capital Q by T. Capital Q by T. This is equal to K into hydraulic gradient, and hydraulic gradient is H by L, and this is A. But we need coefficient of permeability. So coefficient of permeability K is given by Q by T, L by H into 1 by A. Into 1 by A. I think I didn't teach you this also. I whether told you, I don't know. Empirical formulas that you have to read. Not that much difficult. Only thing now you remember is, for constant head permeability test, coefficient of permeability K is given by Q by T, L by H, 1 by A. L is length of specimen, H is constant head which you have maintained, A is cross-sectional area of specimen, Q is volume connected, T is time. T is time. This you know very well. This you know very well. Got it? Then falling head permeability test I did. That figure is here. Falling head permeability test. Here head is not constant. Actually here you have to, for initial, what is the H1? For initial time, what is the H1? For final time, what is the H2? That difference is H here. So difference of time is also T is there. This is the standing pipe whose area is small a. This is the soil specimen whose area is capital A. Whose area is capital A. So now you know that discharge is given by Q is equal to volume by time. Volume by time. As it is falling, therefore negative has been taken. Volume is given by area into dH. Height of fall into area is volume divided by dt. And this is nothing but 2 from the Darcy's law, KIA. This is nothing but equal to KIA. Got it? This is nothing but equal to this is nothing but KIA.
So discharge Q is equal to KIA, discharge is equal to volume by time. Now here I is hydraulic gradient and I is given by H by L. Now K as it is, RHS ले आओ मैं, I is written as H by L here. I hope it is clear. जल्दी आते नहीं तुम लोग, राजा महाराजा के जैसा आते. K is equal to I is H by L, A is area as it is. This is equal to minus DH by DT into A. अब DT इस तरफ ला लो, DH यही रहने दो, H का फंक्शन इस तरफ ला लो, बाकी के सब इधर ले लो. तो राइट हैंड साइड H का फंक्शन है and left hand side it is the function of T. Okay, so now integrating between the two time limits. So on the LHS we have to integrate with respect to T, and on the RHS we have to integrate with respect to H. With respect to AH. So now here AKAL is constant. Outside it is AKAL is constant, and you have to integrate dt. You have to integrate dt between the limits t1 to t2. Means initial time t1 and final time t2, and you have to integrate h within the limits h1 to h2, h1 to h2. Now here AKAL constant outside, dt is there. So and here h1 h2, I have removed this minus sign, so limits also changes. This you have studied in your 12th standard. Definite integral में limits हटाए तो sorry minus हटाए दे तो limits interchange कर सकते हैं. So now here AKAL constant, integration of dt is t. So once you substitute upper and lower limits, this becomes t2 minus t1. I hope it is everything is clear. If you have any doubts, you can ask. Now 1 by h बनता, 1 by h का इंटीग्रेशन log h बनता. एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो h की जगह, एक बार लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, you will get log h1 minus log h2. Log h1 minus log h2, that is log h1 by h2. So now AKL t2 minus t1 is equal to log h2 by h1. So t2 minus t1, you take t, so we get AKAL t is equal to log E h1 by h2, or k is equal to AL by AT log E h1 by h2. अगर से मैं ये log A जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको हटा के बेस 10 कर दिया तो ये फॉर्मूले में आता 2.333 समथिंग, बट वी टेक 2.3 ओनली. सो k is equal to 2.3 AL AT log 10 h1 by h2, where small a is area of strand pipe, L is length of specimen, capital A is cross-sectional area of specimen. It is cross-sectional area of specimen, and T is the time for falling from H1 to H2, and log 10 H1 by H2. H1 is initial head, whereas H2 is final head. H2 is final head. I think your derivation is very clear today. कोई स्टेप ये डेरिवेशन बहुत पूछता है ही क्या इसमें. इस चैप्टर में आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्पैक्शन में इसमें वही टॉपिक है. किसी को भी क्वेश्चन पेपर सेट करने दो वही पूछना पड़ता, थ्योरी उससे हटके कुछ है नहीं. और कॉम्पैक्शन के तो प्रॉब्लम्स एक ही टाइप के, वो ग्राफ का, और एक दो और छोटे मोटे प्रॉब्लम मैं करा चुका हूं आपको. इसमें एक दो तीन टाइप के प्रॉब्लम है. एक फॉलिंग हेड पे, एंड देन ये एक है फॉलिंग हेड के बाद, एक दूसरा है कांस्टेंट हेड पे, और तीसरा स्ट्रैटिफिकेशन पे. तीसरा स्ट्रैटिफिकेशन. आई होप the derivations are clear to you. Now let me go to the numericals today. So please be with calculator. आपको ही करना है. मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम बताता हूं, बाकी का सब मैं आपको टाइम देता हूं, and you have to do it. Please remember. चुप सुन के मत जाओ, कीर्तन सुने जैसा. Okay, take down this question. Please, very very important question. लिख लो. Calculate the coefficient of permeability. Please कैलकुलेटर साथ में रखो अपने, सबको आपको खुद करना है. चुप देख के लिख लेना नहीं, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने पे ही आते. ये बोर्ड नहीं है, क्लासरूम रहता, बोर्ड रहता तो मैं आके देखता आपको. सो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट. तो आपको सुन रहे हैं आप तो चुप बैठ के मत सुनो, नोटबुक हाथ में रखो, पेन हाथ में रखो, कैलकुलेटर हाथ में रखो, और मैं बताते जाता हूं, ऐसा करो आप.
और जो मैं आपको करने के लिए देता हूं वो भी करो. Calculate the coefficient of permeability. Calculate the coefficient of permeability of a soil sample. Calculate the coefficient of permeability of a soil sample 6 centimeter in height, 6 centimeter in height and 50 centimeter square in cross sectional area. Calculate the coefficient of permeability of a soil sample 6 centimeter in height and 50 centimeter square in cross sectional area. If a quantity of water equal to 430 ml, for ml means cc you can take, please. Ml and cc are one and same, milliliter or cubic centimeter, क्योंकि 1000 ml का 1 लीटर होता और 1000 cc का भी एक ये होता लीटर होता. समझ में आ रहा आपको? So calculate the coefficient of permeability of a soil sample 6 centimeter in height and 50 centimeter square in cross sectional area if a quantity of water equal to 430 ml passed down in 10 minutes, under an effective constant head of 40 centimeter, under an effective constant head of, constant head का problem है ये, constant head of 40 centimeter. On second part बाद में करेंगे. On ore drying, the test specimen has a mass of this much. Taking the specific gravity of soil solids to 2.65, calculate the seepage velocity. ये हम बाद में करेंगे. पहले हम find out करेंगे what is the coefficient of permeability for a soil specimen which is 6 centimeter in height, means its length is 6 centimeter. Height here means specimen का height 6 centimeter means its length is 6 centimeter और उसका cross section area है 50 centimeter square. Quantity of water जो pass हो रहा Q is 430 ml. Q is equal to 430 ml in 10 minutes. Time is 10 minutes. Under an effective constant head, H is equal to 40 centimeter. So given data is L is equal to 6 centimeter, A is equal to 50 centimeter square, Q is equal to 430 ml, and time is equal to 10 minutes. That is 10 into 60, 600 seconds. And H is equal to 40 centimeter. H is equal to 40 centimeter. Calculate the coefficient of permeability of a soil sample 6 centimeter in height. Specimen का height मतलब length ही बनता. L is equal to 6 centimeter. Area of cross section is 50 centimeter square. Area of cross section is 50 centimeter square. That is A is equal to 50 centimeter square. Q is equal to 430 ml. Capital Q. Please don't get capital Q discharge नहीं है, वैल्यूम है यहाँ पर. स्मॉल Q को डिस्चार्ज लेते, जबकि फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कैपिटल Q को भी डिस्चार्ज लेते थे. तो यहाँ Q को वैल्यूम है, इट इज 430 ml. Time is 10 into 60, 600 seconds, and H is 40 centimeters. H is 40 centimeters. We know that for constant head permeability, K is given by Q by T, L by H into 1 by A. Remember, all the units should be in the same dimensions, and we are here taking in centimeter, so dimensions are one and the same. L is equal to 6 centimeter, A is equal to 50 centimeter square, Q is equal to 430 ml, and T is equal to 10 into 60, 600 seconds, and H is equal to
40 centimeters. H is equal to 40 centimeters. K is equal to Q by T, L by H, 1 by A. Q is 430 ml, that is cc. Time is 10 minutes, but convert into seconds. 600 seconds. Length is 6. Height is 40. 1 by A means cross sectional area 50. इसको सिंप्लीफाई करो आप, देख के आंसर मत लिखो, और करके आपको आंसर आता 2.15 into 10 to the power -3 centimeter per second. K is equal to 2.15 into 10 to the power -3 centimeter per second. Hopefully you got this answer. बहुत सिंपल है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी का प्रॉब्लम है. एवरीथिंग इज गिवन टू यू. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K here. The value of K here. So K is 2.15 into 10 to the power -3 centimeter per second. Got it? So now once you get K, suppose वो पूछा convert this K, it is in centimeter per second, but most of the times permeability is very small. So what I want is in second में इतना नहीं चाहिए मुझे, एक दिन में कितना permeability होना वो चाहिए. तो please convert this into meters per day and tell me the answer of K. What I am asking you, whether you are following, ये जो आंसर आया हमारा ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है बेटा. आपको क्या करना है, ये मीटर पर डे में निकालना है. कैसा निकालते करो, देखिए कितने लोग करते हैं. आपका मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग है. K is in 2.15 into 10 to the power -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो और सेकेंड्स को डे में कन्वर्ट करो. और आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, एक डे में 24 आवर्स रहते, एक आवर में 60 मिनट और फिर एक मिनट में 60 सेकेंड. तो मैं ये आंसर चाहता हूं, what I want is I want this answer in meters per day. I want these answers in meter per day. करो प्लीज. एनीबॉडी एटलीस्ट वन फेलो. ये आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, मुझे चाहिए मीटर पर डे में. व्हाट इज द आंसर? बी फास्ट. Yeah, somebody did it. Okay, let me see who is it. Gaurav, very good Gaurav. Yeah, Mahesh, yes. देखो बेटा, कौन नहीं करे मैं आपको बताता हूं. देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड से मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर डे में. अच्छा, ये एक सेंटीमीटर में कितने मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से 100 करना है तो इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर 10 टू द पावर -2 से. 10 टू द पावर -2 से. अब यहां पर देखिए सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो 1/60, फिर मिनट को आवर में करो, समझ में आ रहा है आपको, 1/60, फिर आवर को डे में करो 1/24. 60 इंटू 60 इंटू 24 ऊपर ले जाओ और सबको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1.86 मीटर पर डे. अगर से आपको रेडीमेड भी याद रखना है तो याद रखो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 864 मीटर पर डे. तो ये जो आंसर आया आपको इसको 864 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट दी आंसर. यू विल गेट दी आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर मीटर पर डे में ही पूछता. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर मीटर पर डे में ही पूछता. गॉट इट? ओके. अभी सेकंड पार्ट करेंगे हम. सेकंड टर्म पार्ट में क्या बोलता, ऑन ओवन ड्राइंग द टेस्ट स्पेसिमन हैज अ मास ऑफ 498 ग्राम. जो स्पेसिमन आप परमेबिलिटी फाइंड आउट करने के निकाले उसको हम ओवन में रख के ड्राई करें. अगर से ड्राई करें तो 498 ग्राम्स आता उसका वेट.
taking the specific gravity of soil solids as 2.65, taking the specific gravity of soil solids as 2.65, specific gravity 2.65 अगर से आप लेंगे तो calculate the seepage velocity of water during the rest. तो seepage velocity कितना है, और seepage velocity is equal to discharge velocity by n. तो discharge velocity निकालेंगे तो डाटा क्या क्या दिया देखो, और ओवन ड्राइंग टू 4 ड्राइड मास है, देखिए रो डी निकालो आप, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई बाय वॉल्यूम, मास कितना है ड्राइड 498 है, वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट 50 इनटू 6, तो 1.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है आपका रो डी. दिस इज योर रो डी, that is mass density. Okay, once you get mass density, E can be found, wide ratio ये आपको मालूम है, E is equal to G rho W by rho D minus 1, ये सारे वैल्यूज आपको मालूम है. You will get E is equal to 0.595, isn't it? First you get mass density, that is rho D. Rho D is equal to md by V, is 498 by 50 into 6 equal to 1.66 gram per centimeter cube. E is equal to G into rho W by rho D minus 1. So 2.65 into 1 divided by 1.66 minus 1. So E is equal to 0.595. And once you get E, N is equal to E divided by 1 plus E. This is 0.95 divided by 1 plus 0.595. Divide करो 0.373. 0.373 is N, and Vs is equal to V by N. V is 1.435 जो भी velocity है, N आप अभी calculate करें तो seepage velocity is 3.85 into 10 to the power minus 2 centimeter per second. Please take down. क्या नहीं लिख लेते, क्या नहीं लिख लेते, क्या करते, मुझे तो समझ में नहीं आता. Things are clear now? पहले रो डी निकालो, रो डी के बाद ई निकालो, ई के बाद एन निकालो. वी एस इज इक्वल टू वी बाई एन. वी ऑलरेडी वी नो इट. ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज. शैल आई मूव टू फर्दर? कुछ डाउट है किसी को? हाँ हाँ, यही तो मेरे को भी पूछना था सालों के. यू आर राइट. वी का वैल्यू कैसा आया मुझे भी नहीं मालूम, चुप रख दिया मैं. मुझे क्या करना है, बुक देखता हूँ रखता हूँ, मुझे एग्जाम थोड़ी देना है. बोलो वी का वैल्यू कैसा आया प्लीज, कौन बोल सकता? वी का वैल्यू मैं 1.435 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रखा, तो v का वैल्यू कैसा आया? हाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ v? कैन एनीबॉडी टेल हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ v? देखो बेटा, q इज इक्वल टू, मैं यहां नहीं करा कैलकुलेशन, लिख लो मैं सालों के. q इज इक्वल टू a इंटू v, v इज इक्वल टू q बाय a. राइट, एटलीस्ट मतलब आप कब, मुझे ऐसा पूछने से क्या लगता है कि आप कम से कम देख रहे. सो v इज इक्वल टू q बाई ए. v इज इक्वल टू q बाई ए. अच्छा, q बाय ए. मुझे ये बोलो q कितना है? q इज वॉल्यूम बाय टाइम, दैट इज 430 बाय 600. वो क्यों आता है आपको? 430 बाय 600 करो, उसको आप डिवाइड करो एरिया से, एरिया स्पेसिमेन है 50. So 430 by 600 that divided by 50 करो, you will get velocity. ये कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं करा, मैं डायरेक्टली लिखा. प्लीज कैलकुलेट करो इस फॉर्मूले से वेलोसिटी. मैं, इज इट क्लियर नाउ?
तो यहाँ पर v डायरेक्ट लिखा मैं, तो v कैसा आता मैं आपको बताऊं, q इज इक्वल टू a इंटू बी, देयरफॉर v इज इक्वल टू q बाई a। q आपको मालूम है, वॉल्यूम बाय टाइम, दैट इज 430 बाय 600, कैपिटल क्यू आता और वॉल्यूम आता, दैट डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज 6 मिनट्स, तो 60 सेकेंड्स, तो डिवाइड बाय 60 करो, यू विल गेट द आंसर। आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर नाउ। Okay, now you will get the, this is the discharge velocity. Whatever the above velocity you got is discharge velocity. Now this is seepage velocity. Now this is seepage velocity. सारा प्रॉब्लम क्लियर है? क्लियर है बोल तो यस बोलो। अगला प्रॉब्लम आपको खुद करना पड़ता, और एक क्वांटिटी आप याद रखो, ये एमसीक्यूज में या गेट में काम आ सकता है आपको। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 864 मीटर्स पर डे। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 864 मीटर पर डे। एक सेम प्रॉब्लम है, आप लोग करके बताओ मेरे को। एवरीबडी हैज टू डू इट, एवरीथिंग इज सेम, ओनली डाटा हैज बीन चेंज्ड। Calculate the coefficient of permeability of a soil sample 6 centimeter in height and 50 centimeter square in cross sectional area। सेम है, हाइट और एरिया तो सेम है। If a quantity of water equal to 450 ml, ये 430 की जगह 450 ml passed down in 10 minutes under an effective head of 40 centimeters on over drying, सब डाटा यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज किया, वही पूछा। पिछला प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम पढ़ो, और मैं आपको 4 मिनट टाइम देता हूं, करके बताओ मेरे को। प्लीज लिख लो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखो और सभी लोग करो प्लीज, ईच एंड एवरीबडी। आंसर देखकर ही मैं अटेंडेंस देता हूं। देखो आप, फिर आप लोग ऐसा करें तो सभी को आंसर लिखना है इसके, तो ही अटेंडेंस मिलता। देखो 4 मिनट्स टाइम, पिछला प्रॉब्लम जैसा है वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक दो वैल्यू चेंज किए हुए हैं। चलो जल्दी, 2 मिनट और टाइम देता हूं, चुप मत बैठो।
करो जल्दी करो. What is the answer? First, what is K? And then what is seepage velocity? Yes, somebody did very good. Okay, beta. Sheetal Bahirwade did. Others, I think it is right. ये करो बेटा आगे. Seepage velocity करो शीतल. One more fellow did. Vaishnavi, convert this into meter per day, beta. You multiply this value with 864 directly and tell me the answer. I want answer in meter per day and then you calculate what is seepage velocity. करो सभी लोग करो. इसके बाद ब्रेक होता. ब्रेक में करो. यस सोनाली पाटिल राइट. वेरी गुड. सीपेज करो बेटा. उसके बाद ब्रेक होता. ब्रेक के बाद ज्वाइन हो जाओ. फिर करो सभी लोग. जो आंसर दे रहे मैं उनको अटेंडेंस देता हूं. देखो कुछ तो गलत सलत तो लिखो. कम से कम वहां है बोल के मालूम तो होता. चुप चालू करते पता नहीं कहां जाके बैठते. ओके शीतल. शीतल ओके. करो प्लीज सभी लोग. इसके बाद एक ब्रेक ले लो 2-4 मिनट का. एक प्रॉब्लम सभी लोग करो. उसके बाद फिर ज्वाइन हो जाओ.